Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक बार में क्रैक करने का मोटिव एक था कि आई न्यू कि देयर इज नो चांस ऑफ giving it second time because of my experience living in Navi Mumbai, Airoli, and I was working with Capgemini. Capgemini. I could guess. अगर तूने Airoli बोला ना, I could have guessed कि Capgemini होगा. So push myself a little hard every day. And थोड़ा थोड़ा देती रहती थी कैट मॉक्स देती थी हर हफ्ते मेरा एक मॉक का फिक्स था. एक तो देना ही देना. This is that just don't give up on your dreams. Like once you start, अब जब तक एंड पॉइंट और रिजल्ट ना मिल जाए, just don't give up on it. Hi everyone, welcome on board. We got Shivani Gola here. Hey Shivani, welcome on board. Hello everyone. Shivani is a student of IIM Kozhikode. इसने फाड़ दिया, लड़की ने एक बार कैट दिया, नंबर आए और फाड़ के अंदर घुस गए. लोग बोलते हैं कैट क्रैक करने के लिए IIM जाना है तो एक बारी कैट दो बारी कैट दो, देते रहो. बट शी has killed it right now. We got to listen to her story. Shivani, how the preparation यार, मतलब एक ही बार में तूने क्रैक किया. Tell us your journey. Okay, so तो एक बार में क्रैक करने का मोटिव एक था कि आई न्यू कि देयर इज नो चांस ऑफ giving it second time because of my experience. क्योंकि there is a saying, because I was preparing, so I was going through the Quora comments. So there is a saying कि when you have an experience of more than 2 years, they don't generally take you because you go in the upper bracket of experience. So that's why I was knowing that this is the first and last chance. So that is why the desperation level was so high that I want an IIM or some big B school at this time only. Otherwise, there is no option. Otherwise, I'll be stuck in this position only. So I'll start with when I joined I was working with a reputed IT company in Mumbai. And first year was chill. I was enjoying my work, everything. But then I started feeling that there is a lot more to explore. And where were you working? You were in Bombay? Yeah. I was in Bombay. Where in Bombay? I was living in Navi Mumbai, Airoli, and I was working with Capgemini. Capgemini. I could guess. अगर तूने Airoli बोला ना, I could have guessed कि Capgemini होगा. I think वहाँ पे Accenture वगैरह भी है, but you got a very big campus. Nice. Yeah. तो 2 साल तूने IT किया, फिर तुझे लगा भैया ये तो नहीं हो पाएगा, चलो सामान उठाओ. तो ये था वो बेसिकली एक साल में realization शुरू हो गया that now the enjoy part is enough. Now let's get serious about life and career. So मैंने एक साल के एंड में ही इन दिसंबर और जनवरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैट से जस्ट एक साल पहले ज्वाइन कर ली थी कोचिंग. एंड आई वाज लकी दैट माय प्रोजेक्ट टाइमिंग्स वर 12:30 to 10. So that was an American client, right? So I was working it's 4 o'clock. That's a watch, sorry. So yeah. So क्या होता था कि मैं सुबह उठ के प्रिपेयर कर लेती थी, like 2 or 3 hours that is required in daily preparation. तो ऑफिस से आके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आई नो, बट आई वाज लकी इन दैट पार्ट कि मेरे को ऑफिस से पहले ही टाइम मिल जाता था 4-5 घंटे का. एंड आई मेड श्योर दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस एट माय फ्लैट, और आई यूज्ड टू लिव सिंगल इन माय रूम. देयर वर we were 2 girls who were living in the flat, one in one room. So yeah, I made sure that the environment at my flat is so good that I don't get disturbed by other factors. और एक साल मैंने पूरा enjoy किया मुंबई में, the night life, the pubs, the drinking, etc. everything. But then उसके बाद I got serious. I used to compromise my weekends. Used to go to coaching centers to prepare. Weekends का coaching था मेरा. And वीकेंड्स पे जब बच्चे जाते हैं पब्स में और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं, यू गेट अ फोमो इज राइट. तो वो भी लगता था. इफ यू हैव सीन पंचायत, द सेम थिंग हैपेंड विद मी. तो the same life जी रहे हैं. There is no you get frustrated at times, but then there is a desperation, there is an end point which is waiting for you and which keeps you energetic and encouraged to prepare more and more and more. And then after 4 or 5 months of preparing, I started taking mocks.
फर्स्ट मॉक में तो मेरे इतने गंदे मार्क्स आए थे दैट आई क्राइड लिटरली एंड आई लॉस्ट होप मैं कुछ भी कर पाऊंगी अब जिंदगी में. But then I used to, push myself a little hard every day. And थोड़ा थोड़ा देती रहती थी कैट मॉक्स देती थी हर हफ्ते मेरा एक मॉक का फिक्स एक था तो देना ही देना है. that so I had this I still have this habit कि मैं अपने एक शेड्यूल बना के रखती हूँ and I make sure that I कि मैं वो strict शेड्यूल फॉलो करूँ. बट वो अभी नहीं होता कैंपस में एज आई सेड देयर इज नो शेड्यूल दैट यू कैन फॉलो. लेकिन वो वहाँ पे हो जाता था बिकॉज माय आवर्स वर फिक्स्ड एंड वीकेंड्स पे छुट्टी रहता था एंड वर्क प्रेशर वर नॉट दैट मच. तो वीकेंड्स पे मैं मॉक्स देती थी एंड समटाइम्स जब कैट अप्रोच करने लगा आफ्टर सितंबर आई मेड श्योर कि मैं पूरे हफ्ते में 2 मॉक्स तो दूँ एटलीस्ट. एंड फिर जब नवंबर आया तो फिर मैंने सिर्फ मॉक्स दिए. आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग. सिर्फ मॉक्स दिए कैट के पेपर लगाए. एक दिन पहले तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी कैट के. आई वाज लाइक अब जो होगा देखा जाएगा. लेकिन उससे एक दिन पहले मैंने कैट 2017 का पेपर लगाया था. पेपर देख लेना तो मुझे थोड़ा याद है दैट ओके आई एम नॉट दैट बैड. आई एम नॉट दैट इन अ बैड पोजीशन. फिर कैट दिखाया. फिर मैं कैट देने गई. फिर जब मैं वापस आई तो मेरी रूममेट ने मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया था. तो दैट वाज अ स्वीट जेस्चर फॉर मी. आई न्यू दैट उसने बोला दैट आई न्यू तेरा पेपर अगर जैसा भी हो बट यू विल कम स्माइलिंग. तो उसने मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया. इट वाज सच अ स्वीट जेस्चर. जर्नी वाज सो गुड. एंड देन फिर पेपर कैट देने के बाद फिर वही कोचिंग कंपनी एवरीथिंग. फिर जब इंटरव्यूज कॉल आने लगे तो I'll talk about your interview part in a minute. We'll do the separate part for that. But before that, यार when you were preparing, हम सब लोग चीज़ें भूल जाते हैं. But verbal होता है, quant होता है, LRDI होता है. तो इसमें से which was the favorite section है और किसमें तो score अच्छा कर रही थी? Quant. Okay. Quant was my favorite. So you're an engineer, right? Being an engineer, I think quant तेरा अच्छा था and you killed it. So overall, you got 95.23 and I'm Kozhikode, right? Yeah. That's so amazing. That's so amazing. Any parting thoughts which you have for all these people who are listening to you? देख यार अभी तो रोल मॉडल है यार शिवानी. एक बार में लोग सोचते हैं कि नहीं पहुंच सकते और मैं इनको बोलता रहता हूँ एक बार में हो जाता है. And I cracked SPJ in first time, मिला और ले लिया. And what are your parting thoughts to all these people who are listening to you? Parting thoughts, I would say कि just don't give up on your dreams. Like once you start, अब जब तक एंड पॉइंट और रिजल्ट ना मिल जाए just don't give up on it. और उसके बाद भी if you are being rejected, it's not like that I have not been rejected in the past. Obviously, मैं एक experienced person हूँ. I was trying for other jobs also, right? There have been rejections in that part of my life. So, but that doesn't mean that you're incapable of something, right? Just don't give up and give it a go. Keep trying, and then it will happen. Great. एक समय तो ऐसा तो भगवान को रियलाइज होगा कि नहीं यार दे देते इसको. This is so amazing, Shivani. Thank you so much for your time. You're really awesome, and may God bless you in your internship at Maersk and keep killing, yaar. Keep killing.